So very good evening class. Today is the class of MCQ class 21 of the UGC-NET paper 2 mass communication and journalism. Today we will discuss some of the important questions which is very much beneficial for your UGC-NET exam, right? Question number 182, that is libertarian philosophy, private ownership of the property is provided by. Everybody will answer constitutional law, B judicial law, C legislative law, D civic law. Everybody will answer. So in the libertarian philosophy, private ownership of the property is provided by. Everybody, private ownership of the property. So right answer is that is A. Yes, General, that the right answer. A जो है आपका क्या है? Right answer है. Okay. So in the libertarian philosophy, private ownership of the property is provided by the constitutional law, right? The concept of property and ownership are very closely related to each other, that we know, right? एक side आपका है property and second side that is ownership, right? These two concept is very closely related to each other. The two are mutually interdependent and correlative, right? They both are interdependent and correlative. How it is interdependent and how they are correlative? See, one necessarily implies the existence of the other. So there can be no property, right? There can be no property without ownership, right? बिना ऑनरशिप का कोई प्रॉपर्टी नहीं है और बिना ऑनरशिप का कोई property नहीं है, right? That I am saying, please pay attention here. There can be no property without ownership and no ownership without property, right? Property के बिना ownership नहीं, ownership के बिना property नहीं, right? Because that they both are interdependent and correlative, right? So in this way we can see that the private and property and ownership are very closely related to each other, right? So right to property ceased to be a fundamental right with the 44th constitutional amendment in the 1978, right? 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से सीज कर दिया गया, राइट? राइट टू प्रॉपर्टी को पहले हमारी 7 फंडामेंटल राइट्स थी और 7 फंडामेंटल राइट्स में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी था, राइट? बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ, वहां इसको हटा दिया गया, सीज कर दिया गया, राइट? And it was repealed, right? फिर से ये चीजें वापस आया. And Article 13 in the Constitutions, right? It is about mention about the ownership, private right to private ownership. यहाँ पर Article 31 Constitution का Article 31 में ये mentioned है. It not only guarantees the right of private ownership but also the right to enjoy and the dispose of property free from the restrictions other than reasonable restrictions, right? So the article states that no person shall be deprived of his or property except by the authority of law. It means that, so this is what about the private ownership, right to private ownership. So right to private ownership, this is mentioned in the constitutional law, right? That is Article 31 of the Indian Constitution law, right? क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे. ऑल क्लियर? यस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, इट्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन रिसर्च चैप्टर. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग is a type of cluster sampling, random sampling, accidental sampling, innovative sampling. Everybody? Yes, very simple question it is. जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे. Yes, very good. All right. So here the right answer that is yes, A. A जो है आपका right answer है. So if I ask you, चलिए क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं यहीं पे. Very important questions. Multi-stage sampling is an extension of, किसका एक्सटेंशन है? जल्दी से बताएंगे. This is the question can be altered, right? Question can be altered.
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ, जल्दी से बताएंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग. यस, वेरी गुड, दैट्स द क्लस्टर सैम्पलिंग. सो आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में इट इज रिटन हियर दैट multi-stage sampling, it is often considered as an extended version of the cluster sampling, right? Extended version of the cluster sampling. In the multi-stage sampling, you divide the populations into clusters. अलग अलग clusters में हम इसको divide करते हैं, right? And select some cluster at the first stage. ठीक है? It is useful when your research population is large. Multi-stage sampling को हम कब use करते? When our population is large, right? That is the first point. And in this multi-stage sampling, what we do, we divide the population into the different clusters, and we select some clusters at the first stage. That is what it is, an extended version of the cluster sampling. So remember it, this is very much important. Whenever this question is asked to you, it is an extended version of the cluster sampling. So it is a type of cluster sampling. Okay, all clear? चलिए, question number 184. Daniel Bernstein coined the term Greenpeace, B, pseudo event, C, images, jackpot. Everybody, Daniel Bernstein coined the term. कौन सा टर्म को डैनियल बर्स्टिन ने coin किया है? Everybody. Yes, very good. Everybody answer. Very important questions. Yes, that's the right answer. B जो है आपका right answer है. Okay, absolutely. So Daniel Bernstein coined the term that is pseudo event. What is pseudo event? Pseudo event is an event produced by the communicator with the sole purpose of the generating media attention and publicity, right? This is what is the use of pseudo event? This is one kind of the event that is produced by the communicator and with the sole purpose of generating media attention and publicity, right? Media attention and publicity, very much important, right? So they can alter the question, name that event produced by communicator with the sole purpose of the generating media attention and the publicity. So that answer will be pseudo event, right? So these events lack real news values. Real news values को lack तो करता ही है, but still become the subject of the media coverage, right? Still become that subject of media coverage because this is a kind of the event which having the media attention and the publicity, right? With there are main purpose, right? उनका मेन पर्पस ही होता है कि मीडिया अटेंशन और पब्लिसिटी को गेन करना, बनाए रखना, एक मीडिया कवरेज का सब्जेक्ट बन जाना, राइट? सो दिस इज व्हाट दैट इट इज अ काइंड ऑफ event. Okay, so in short we can see that pseudo events are a public relation tactics, right? ये किसका है? Public relation tactics है, right? It is a techniques that used by the public relations, right? In the public relations में इसको हम use करते हैं pseudo event को in order to gain the media coverage, in order to gain the media publicity or the media attentions, right? So the term pseudo event was coined by the theorist historian and Daniel J. Bernstein in his 1961 book that the image a guide to pseudo events in America, right? That was the book name, the image a guide to pseudo events in America, right? So that is what important in these questions. Okay, next question, question number 185. Mistake in news reading is known as, जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता है without options. This is very much important and this question which we have already discussed, right? So jaldi se batayenge. Fluff, foot in the door, ident and lift. Everybody answer. Mistake in news reading is known as. Very good, absolutely, everybody is right here. बहुत ही सुंदर, सभी लोग सही आंसर्स दे रहे हैं. राइट आंसर है फ्लफ. ओके, मिस्टेक इन न्यूज रीडिंग इज नोन एज फ्लफ. उसको क्या बोलते हैं? फ्लफ बोलते हैं.
So flop in simple terms means to make a mistake, especially in the delivery of the lines by a performer, right? जब आप एक न्यूज रीडिंग करते हो उस समय जो मिस्टेक्स निकलती हैं जब आप लाइन डिलीवर करते हैं, so that mistakes is known as fluff, right? So when a reader makes mistakes while reading a news, they call it as a fluff. Remember it. Next questions. Hard news is mostly spot news, society news, entertainment news, and filler news. Everybody. हार्ड न्यूज मोस्टली क्या होता है? स्पॉट न्यूज होता है, सोसाइटी न्यूज होता है, एंटरटेनमेंट न्यूज होता है या फिलर न्यूज होता है? जल्दी से आंसर करेंगे. सो दैट हार्ड न्यूज इज मोस्टली spot news. Very good. So right answer, that is hard news is the kind of the most important news that usually appeared on the front page of the newspaper, right? Generally जो hard news है आजकल, that is published on the or appears on the front page of the newspaper, that becomes the important news. Why? Because they are also known as a spot news because it is reported immediately and it occurs and is always the latest one, right? ये इसलिए होता है क्योंकि ऑन द स्पॉट, राइट, लाइक द एक्सीडेंट, राइट, एक्सीडेंट हमारा ये स्पॉट न्यूज है, राइट, दैट इज वेरी बिग न्यूज एंड दैट इज हार्ड न्यूज, राइट. क्राइम न्यूज जो होता है, राइट, दैट कैन बी एनीथिंग, किसी भी तरीके का. अगर कोई हार्ड न्यूज है, राइट, द हार्ड न्यूज एंड बिटवीन द सॉफ्ट न्यूज देयर इज द लार्ज डिफरेंस दैट वी हैव read in the classes. हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं. So that is what the crime news are hard news, right? So that is also that it is mostly spot news. जो हमारा spot news होता है, breaking news होती है, वो हमारा क्या होता है? Spot news होता है, right? All the लगभग almost all the breaking news is the spot news, right? Dash is a headline composed of a single line. Dash is a headline composed of single line. Options are credit line, B cut line, C catch line, D cross line. Everybody. Dash is a headline composed of a single line. Single line, जल्दी से बताएंगे. D जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, दैट इज D क्रॉस लाइन. Cross line is a type of headline, right? It is a type of headline, okay? As it one of the simplest type of headline consisting of a single line. हमेशा याद रखेंगे ये हमारा क्रॉस लाइन हेडलाइंस जो होता है वो सिंगल लाइन में होता है, but it has the feature, it has words centered over the columns, right? It is not on the single column, right? अगर सिंगल कॉलम भी है तो भी वो क्रॉस लाइन होगा, like, but the major features that how to identify the cross lines headlines, that here it is given the characteristics, okay, that it has words centered over the columns and it is used when there is more than one column for a story to produce a formal look, right? Like for an example, ये आपका न्यूज़पेपर है, right? और यहाँ पे आपका this is the columns, एक one column, two column, three column, right? एक टू कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम्स है, राइट? फॉर एन एग्जांपल इट इज, राइट, फॉर एन एग्जांपल बिकॉज ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर में जनरली 8 कॉलम्स आर देयर, बट वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल इन अ 4 कॉलम्स, राइट? सो इफ अ हेडलाइन, अगर कोई एक हेडलाइन सिंगल लाइन में अगर यहां से बनाया गया है, राइट, सो दैट इज व्हाट क्रॉसिंग द कॉलम्स, राइट, एंड इट इज ऑन द सेंटर्ड, राइट? अगर सेंटर में है, फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से आप एग्जैक्ट फिगर अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट, एंड न्यूज विल बी, पूरा न्यूज होगा इस तरीके से, पूरा न्यूज होगा, राइट? दिस विल बी अ न्यूज एंड योर हेडलाइंस विल बी ऑन द सेंटर्ड इन ए सिंगल लाइन, राइट? दिस इज योर हेडलाइन. ये आपका क्या है? हेडलाइन. एंड दिस हेडलाइन इज नोन एज क्रॉस हेडलाइन. इसको हम क्रॉस हेडलाइन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंगल लाइन में है और it has words centered over the columns, right? Centered over the columns, right? 4 columns के centered में है and it is used when there is more than one column for a story to produce a formal look, right? It is all clear, everybody? आज न्यूज़पेपर का आपने नाम सुना होगा. आज न्यूज़पेपर फाउंडर बताइए, आज न्यूज़पेपर का फाउंडर, एवरीबडी. शिव प्रसाद गुप्ता. ओके, राइट इट डाउन.
Aaj newspaper, that is founder Shiv Prasad Gupta, and the year please also write 1920. Okay, 1920. Next questions. Question number 2. Independent, जल्दी से बताएंगे. Independent, the Independent, 1919 by the founder by the Motilal Nehru. Okay, चले next questions. Question number 3. Midday newspaper, everybody, 1979. Yes, very good. Yes, Ansari, very good. Hamid Ansari or Khalid Ansari? Khalid Ansari, right? Note it down. Okay. So question number 4. BBC, जल्दी से बताएंगे founder. Yes, John Reith, right? John Reith in the year 1922. Question number 5. The Tribune, जल्दी से बताएंगे. The Tribune. Yes, Dayal C Majithia. Very good, Vanika. Dayal C Majithia. Okay. 1881, right? Note it down. Very good. The Asian Age newspaper by, write it down, MJ Akbar. Okay. Write it down. Very important. Okay. सारी चीजें ये important है. Next questions. Question number 7. Pratap. Questions can be like which one of the following editors is associated with the Pratap? So what will be the answer? Ganesh Shankar Vidyarthi. Okay. Questions number 8. Propaganda, right? जल्दी से बताएंगे. Dr. Goebbels, right? No. Edward Bernays नहीं. Father of propaganda, that is Dr. Goebbels. Okay. Note it down. Question number 9. Founder of the Statesman and editor of the Times of India. Yes, very good. Right answer, Robert Knight. The Statesman 1875 or Times of India 1838, right? The passing of traditional society. Yes, very good. The author, that is Daniel Lerner. Very good. बहुत ही सुंदर. चलिए, all right. Questions number 11. Understanding media, the extension of man. Marshall McLuhan. Okay. Marshall McLuhan. Very good. Question number 12, right? Name the author of the book Indian Communication and Revolution. Very important book. This book you have to read. आपको book ये पढ़ना चाहिए. बहुत ही important book है. बहुत ही important. Indian Communication and Revolutions. इस book से बहुत questions आते हैं, right? Many of the questions come from this book. You have to buy it and you have to read it, right? Indian Communication and Revolution. No. Very good. जल्दी से बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे. Please write it down. Award M. Rogers and Arvind Singh. Okay. Sorry, Arvind Singh. Award M. Rogers and Arvind Singh. Okay, clear है, जल्दी से बताएंगे. Vanika, it is clear. Tendol, it is clear. Award M. Rogers and Arvind Singh. Okay. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. चलिए, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट बुक बताएंगे जल्दी से. मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट. यस, विल्बर स्रैम. ओके, वेरी गुड रचना. विल्बर स्रैम. एक बहुत ही फेमस बुक है, सोशल मार्केटिंग. एवरीबडी आंसर इट. यस, वेरी गुड वर्णिका. Philip Kotler. Next, questions number 15. Yes, Rachna. Philip Kotler. Handbook of Public Relation. Everybody, जल्दी से बताएंगे. Handbook of Public Relation. चलिए लिखिए, आंसर लिखिए. Philip Leslie and Sam Black. Okay. Philip Leslie and Sam Black. Handbook of Public Relations. Okay. Question number 16. The Attack on Mumbai. Famous journalist written by. बहुत ही famous journalist है. That written by, जल्दी से बताएंगे. हिंदुस्तान टाइम्स के बहुत ही, yes, हिंदुस्तान टाइम्स के जाने माने पत्रकार. The famous journalist of Hindustan Times. The last name is Sanghvi. जल्दी से बताएंगे. The last name it is Sanghvi. Yes, very good.
वीर सांघवी, associated with Hindustan Times 1924, okay, established in the year 1924, not published this book in the 1924, it's the ST, right? ST, that is in the 1924 it was established, okay. Question number 17, जल्दी से बताएंगे, Waters of Hope book written by, Waters of Hope, yes, very good वर्णिका, VG वर्गीस, ओके हम लोग वर्गीस कमिटी पढ़ते हैं। व्हेन वर्गीस कमिटी वाज एस्टैब्लिश, जल्दी से बताएंगे वर्गीस कमिटी कब बना? वर्गीस कमिटी, यस दैट्स गुड, वेरी गुड, 1977, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन्हीं का एक और बुक है, प्लीज राइट इट, वीजी वर्गीस का ही एक और बुक है, विनिंग द फ्यूचर, विनिंग द फ्यूचर, this is also one of the important book, so remember it, Waters of Hope and Winning the Future, this book, both books written by the VG Varghese, okay। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एक वीर सांघवी का बुक हमने बताया, द अटैक ऑफ मुंबई, सेकेंड बुक राइट इट डाउन, मैन ऑफ स्टील, थर्ड बुक रूड फूड या रूड फूड, ओके, फोर्थ इंडिया देन एंड नाउ, ओके, इंडिया देन एंड नाउ, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। इंडिया देन एंड नाउ, रूट फूड एंड मैन ऑफ स्टील, द अटैक ऑफ मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द वीर सांघवी, ओके, द फेमस जर्नलिस्ट एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं पहले, उसके बाद हम बुक्स की बात करेंगे। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, दिस इज अ बुक रिटन बाय, जल्दी से बताएंगे ऑथर, नेम द ऑथर रिटन द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। सो आंसर इट इज, everybody, what is the full name? If anybody can answer, then please answer. Mark, M-A-R-K, Mark, very famous journalist and as well as the author, okay. Second book, right? Second book, please note it down, India in slow motion. Third book, The Heart of India, The Heart of India or The Heart of India, okay। चलिए None Stops India, None Stops India, ये सारे इंडिया वाले जितने हैं ये मार्क टली, ओके। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, द हार्ट ऑफ इंडिया एंड द नन स्टॉप्स इंडिया, ये सारे क्या है, ऑथर बाय द मार्क टली, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, द नेम ऑफ रोज, जल्दी से बताएंगे, रिटन बाय अम्बर्टो इको, ओके, नोट इट डाउन, अम्बर्टो इको द ऑथर, the book is The Name of a Rose, The Social Construction of Reality, this is the book written by, it is Peter L. Berger and Thomas Luckman, okay, Thomas Luckman। This question has asked, right, previous year में question पूछा जा चुका है, in the year 2012 UGC June, ठीक है, The Social Construction of Reality, that Peter L. Berger and Thomas Luckman, okay। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिजाइनिंग मैसेज फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग मैसेज फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ओके, डिजाइनिंग मैसेज फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड ऑडियंस पार्टिसिपेशन, दैट बुक इज ऑफ द बेला मोदी, ओके, बेला मोदी। चलिए ये सारे बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स, प्लीज नोट इट डाउन। मार्क टली का जो हमने बात किया, मार्क टली एसोसिएटेड विद, जल्दी से बताएंगे कौन से न्यूज चैनल से, एवरीबॉडी कौन से चैनल से एसोसिएटेड थे, एसोसिएटेड विथ, यस वेरी गुड, दैट बीबीसी, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1922 बाय द जॉन रीथ, ओके। बार बार रिपीट इसलिए करें ताकि आपको याद हो जाए, ओके। एवरीबॉडी, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स इज नोन एज, किसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मॉडल्स? Shannon and Weaver model, that is also called mathematical model of
Communications. Okay, very good. Father of public relation. Yes, Edward Bernays. Okay. कॉन्सेप्ट गिवन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, जल्दी से बताएंगे पब्लिक ओपिनियन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन गिवन बाय, चलिए एक क्वेश्चंस बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं बताता हूं आपको। वॉल्टर लिपमैन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ, वॉल्टर लिपमैन, वॉल्टर लिपमैन गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कैसे हो गया पब्लिक ओपिनियन, राइट? पब्लिक ओपिनियन, ओके। वॉल्टर लिपमैन गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म, जल्दी से बताएंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म, यस, राजा राम मोहन राय, ओके। अभ्युदय एक पत्रिका थी, एवरीबॉडी, अभ्युदय, अभ्युदय किसका था, जल्दी से बताएंगे, अभ्युदय। और यू कैन, एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे, अभ्युदय पब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय, ओके। इट वाज वीकली मैगजीन, इट वाज वीकली मैगजीन। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, दिस वाज आल्सो मैगजीन पब्लिश्ड बाय, जल्दी से बताएंगे, परीक्षा गुरु, राइट इट, लाला श्रीनिवास दास, ओके, लाला श्रीनिवास दास, ओके। इज देयर एनी डाउट, देन प्लीज आस्क। चलिए, सो थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।